अगर आप magically beautiful or attractive stories लिखना चाहते हैं, then this video is just for you. So by the end of the video, you will be able to write a well-formed creative writing. ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं with any part of their creative writing. पेरेंट्स जो फोकस कर रहे हैं अपने बच्चों के areas of improvements पर, and teachers who have questions in mind that how to improve the students with different areas of improvement required. Watch the video till the end. This is Mom T Story. I'm a teacher and subscribe for more. क्रिएटिव राइटिंग बहुत से स्टाइल्स की हो सकती है, जिसमें आप पोएम राइटिंग भी हो सकती है, नैरेटिव राइटिंग भी हो सकती है. But in today's video, we are going to talk about how to write a story. And every story must have some parts. वो parts क्या हैं? Beginning, middle, and end. कहानी का एक आगाज़ होता है, एक उसका दरमियानी हिस्सा होता है और एक उसका इख्तितामी हिस्सा होता है. For instance, let's take an example of an arm chair. एक आर्म चेयर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे उसकी आर्म्स, उसकी सीट, उसकी लेग्स, उसकी बैक. अगर इसकी कोई भी चीज़ मिसिंग है, then the chair is not complete and it's not usable. आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप उसको चूज़ नहीं करेंगे. Same is the case with the story. एक स्टोरी की अगर तीनों के तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किए गए हैं, then the readers are going to be stuck with your story and they are going to read it till the end. What is written in the beginning of a story? हम स्टोरी के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन लिखते हैं. किस चीज़ का इंट्रोडक्शन? कि स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं. तो दैट इज़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग द सेटिंग एज वेल. स्टोरी कहाँ पर टेक प्लेस हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड सेटिंग. In the later part of this video, we are going to practice some stories as well, so keep watching till the end. And now coming towards the next part of the story, that is middle. So what comes in the middle? Readers are reading your story for some reasons. आप उसमें जब तक कुछ इंटरेस्टिंग सा क्रिएट नहीं करेंगे मिडल में, like something happens to the characters or something serious is happening. अगर आप एक सीरियस स्टोरी लिख रहे हो और फनी लिख रहे हो तो something funny is happening. और अगर आप इस स्टोरी को इसी तरह से लेकर चल रहे हैं, इन्हीं स्टेप्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टोरी राइट कर रहे हैं, then the story is going to be a superb story. और keep in mind कि आप beautiful words जो है वो चूज़ करें, adjectives, adverbs यूज़ करें अपनी स्टोरीज में to make your stories look more beautiful. Now coming towards the end of the story, and then we will see some example stories जिसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि स्टोरीज़ के एक पार्ट जो हैं वो किस तरह से होते हैं और कैसे हम उसको ब्यूटीफुली राइट कर सकते हैं. सो इन कंक्लूजन आप फाइनली बताते हैं कि व्हाट हैपेंड एट द एंड. जो भी प्रॉब्लम अराइज हुआ था सॉल्व कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, उसके पीछे उसकी रीज़न क्या थी. एंड देन यू गिव द एंडिंग सेंटेंस टू योर स्टोरी. नाउ लेट्स मूव टू द स्टोरी राइटिंग. और जैसे कि आपको ये प्रेजेंटेशन में ये कार्टून्स पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, स्कूबी डू की, अगर आपने ये कार्टून्स देखे हैं तो आपके माइंड में ये सारी स्टोरी चल रही होगी कि सेम थिंग्स हैपन इन दैट स्टोरी टू. जितनी भी उसकी एपिसोड्स होती हैं इसी तरह से होता है कि स्टार्ट में वो इंट्रोडक्शन देते हैं, देन कम्स द प्रॉब्लम एंड देयर कम्स द सॉल्यूशन एट द एंड एंड दे रिवील दैट हु इज़ द कल्प्रिट. एंड ऑलवेज कीप इन द माइंड कि आपने अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को हुक करना है, उनके माइंड को हुक करना है. आप कैसे हुक कर सकते हैं? आप लिखेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि कैरेक्टर्स ले रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड नाउ
we'll write a story about this picture. Just look at this picture carefully. What story comes in your mind when you see this picture? आपने करना क्या है? What comes in your mind? आपने लिखना वो है, right? And now let's see कि आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी से कितनी मैच करती है. And this is what we do. हम दूसरी स्टोरीज़ को जितना ज़्यादा रीड करेंगे, हम अपनी स्टोरीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टोरी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम कॉपी कर सकते हैं और स्टाइल को और वर्ड्स को अपने स्टोरीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपना मास्टरपीस बना सकते हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. One day, Tom was playing by the pond. See, the character कौन सा है इसमें? Tom. Tom कर क्या रहा है? Tom was playing. कहाँ पर स्टोरी हो रही है? By the pond. So all these things are in one sentence. अब वो character कर क्या रहा है? He was trying to catch a butterfly in his net. Let's repeat again. One day, Tom was playing by the pond. He was trying to catch a butterfly in his net. And now, in the middle of the story, we are going to write about any problem. So, what is the problem? Suddenly, the butterfly flew over the pond, and Tom didn't watch. Where was he stepping? He fell right into the pond. He was completely wet. He climbed up off the pond and ran home. So you see, इस स्टोरी में प्रॉब्लम क्या था कि बटरफ्लाई जो है वो उड़ रही थी और टॉम उसको पकड़ते हुए उसने नहीं देखा कि वो अपना पाँव कहाँ पे रख रहा है. He stepped right into the pond और वो उसमें गिर जाता है और वो completely wet हो जाता है. This is the problem. And what did he do? उसने solve उसको कैसे किया? He climbed up off the pond and ran home. And now coming towards the end of the story. And now the end of the story is that he has learned a lesson. That day, Tom decided not to chase the butterflies anymore. He would try to catch some frogs instead. So, this is the end of the story कि उसने decide किया है कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा और वो कुछ frogs पकड़ेगा. And now let's have the overview of the complete story. A boy and the butterfly. One day, Tom was playing by the pond. He was trying to catch a butterfly in his net. Suddenly, the butterfly flew over the pond and Tom didn't watch. Where was he stepping? He fell right into the pond. He was completely wet. He climbed up off the pond and ran home. That day he decided not to chase the butterflies anymore. He will try to catch some frogs instead. Isn't it easy? And now let's try to write a story about this picture. Just look at the picture. What comes in your mind while you see this picture? आपके माइंड में क्या आ रहा है? सोचें. So let's write the beginning. One day, Molly and Ben had to stay at home alone. So, who are the characters? Molly and Ben. And what are they doing? They are staying at home alone. So the story is taking place at home.
एंड एज इन द बिगिनिंग आप जैसे देख सकते हैं कि 1 डे से स्टार्ट हुआ है. आप इसकी जगह पर और बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. सम एग्जांपल्स जो है वो आपकी ईज के लिए आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इनटू द डिस्क्रिप्शन. यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एंड यूज इन योर स्टोरीज, राइट? And now in middle, what has happened? Molly played with her teddy bear while Ben watched the TV. Molly was really loud and Ben got mad. He wanted to take her teddy bear away. Then Mom came and stopped the fight. Now you can see कि problems क्या हुआ है. बच्चे घर में अकेले हैं और obviously अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं. They are watching TV और she is so loud कि Ben is getting disturbed and he took his teddy bear. और इस problem को solve कैसे किया है? Mom came back to home and she stopped the fight. And we know obviously that they would have to suffer some consequences, and now let's see what consequences they are going to suffer. Both of them were punished. They played in their own rooms alone for the rest of the day. So see, this is the end of the story. The problem has resolved. And now let's look at the overview of the story as a whole. Molly and Ben's fight. One day, Molly and Ben had to stay at home alone. Molly played with her teddy bear while Ben watched the TV. Molly was really loud and Ben got mad. He wanted to take her teddy bear away. Then Mom came home and stopped the fight. Both of them were punished. They played in their own rooms alone for the rest of the day. Once you have written the story, आप उसका overview और उसका review ज़रूर करें खुद से भी. Reread the story again and again, find out the mistakes and correct them if you have done any mistake. Or I hope you have got how to write the creative writing. Just आप इसको more beautify करने के लिए different words का use कर सकते हैं और describe कर सकते हैं situations को इससे भी ज़्यादा. So do you want to write or try one more story? So it means that you have enjoyed. So here is the picture. Think about your story. Write a story and post in the comment box. Till then, bye bye. I'll be waiting for your story too. And don't forget